नवरात्रि को लेकर सूरत शहर पुलिस एक्शन मोड में 27 स्थानों पर गरबा का आयोजन। करीब 7,000 पुलिस और होमगार्ड तैनात। 6 जोन में पुलिस के अलावा अधिकारी रखेंगे नजर। श्री पुलिस टीम की महिलाएं पूजा में पारंपरिक पोशाक में रहेगी तैनात। आयोजकों के साथ बैठक कर दिए गए विशेष निर्देश। अग्नि निकास की सुविधा। योजनाकारों से अग्नि के संबंध में उचित सत्यापन की अपील। खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने का आदेश। आयोजकों को गरबा खेलने आने वाले खिलाड़ियों की सामुदायिक जांच की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया। नवरात्र के दौरान महिलाओं को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पुलिस देर रात तक तत्पर रहेगी। नवरात्र के दौरान एसओजी, पीसीबी और क्राइम ब्रांच की टीम भी सक्रिय रहेगी। आयोजकों को सलाह दी गई है कि वे सावधान रहे कि कोई कानून व्यवस्था को हाथ में न ले। इस बात का खास ध्यान दें। क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश करने से रोकने के लिए एआई स्थापित करने की प्रणाली। क्षमता से अधिक लोगों का प्रवेश पाए जाने पर पुलिस कार्यवाही करेगी। आयोजकों को पार्किंग के संबंध में उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस निर्देशों पर अमल करेगी। 3 ऑक्टोबर थी नवरात्रिना तહેવાર ચાલુ થવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપણા સુરત શહેરમાં અલગ અલગ જગ્યાઓ માતાજી કે આરાધના અને ગરબા કરવામાં આવે છે। કુલ સુરત શહેરમાં 2700 જેટલા જગ્યાઓ છે જ્યાં નાની મોટી ગરબાનું આયોજન થાય છે, જેમાં મોટા જો કોમર્શિયલ ગરબાઓ જો ગયા વખતે 17 જેટલા જગ્યાઓ પર મોટા કોમર્શિયલ ગરબાઓ થયા હતા જો અને એના સિવાય जो शहरीों में ओपन ग्राउंड में स्कूल में अलग अलग मिलाने को 2700 आसपास में गरबा आयोजन करवामां आवे छे। एनी संपूर्ण तैयारियां अपना करी लेवामां आवेली छे जो अने एना माटे बंदोबस्त माटे कुल 7,000 जेटला पुलिसना जवानों अने होमगार्डना जवानों तैनात रहेशे अने 6 कंपनी अमारी स्टेट रिजर्व पुलिसना रहेशे अने एना लईने समग्र बंदोबस्तना आयोजन करवामां आवेला छे। अलग अलग जगहों पर टोटल हमारी जो अलग अलग जो 6 जोन्स है डीसीपीसना जोन आमा एक क्विक रिएक्शन टीम रचना करवामां आवी छे, जेमां एक पीएसआई 10 जेटला माणसों कोई पण संजोगोने पहोंची वळवा माटे अलग से तैनात रहेशे अने जेटला भी अमारा कॉमर्शियल गरबाओ छे ज्यां मोटी संख्या में लोग भेगा थवाना छे एमां अमारी सी टीम ना हमारी जो महिला ऑफिसर्स छे, हमारी महिला जवानों छे, एनी टीम जो ट्रेडिशनल ड्रेस में रहेशे अने आ लोग जो खेलैयाओना वेशभूषा में खेलैयाओना वच्चे रहेशे अने एटला इंश्योर करशे कोई पण प्रकारथी अपने कोई बहनों दीकरीओने कोई छेड़ती अथवा कोई तकलीफ नहीं पड़े एना माटे 250 जेटला अपना महिला टीम बनाववामां आवेली छे, जेमां कुल जेटला 33 जेटला अमारी सी टीम रहेशे, बाकी महिला पुलिस स्टेशनना समग्र अधिकारी अने जवानों पूरा आमां रहेशे जो है। तो एक आ प्रकारना पूरी तैयारी करवामां आवी छे अने साथोसाथ हमारा बॉडी वन कैमराओ लईने जेटला भी हमारी पुलिस है, हमारा जवानों है, आ लोगों अंदर अने बहार बधी जगह तैनात रहेशे। कुल 900 जेटला बॉडी वन कैमराओ अमे लोग उपयोग करीश जोईए अने ज्यां अमे लागशे त्यां अमारे कुल 9 जेटला ड्रोन कैमराओने भी हमारे पास जो पुलिस पास है एनो उपयोग करवाना छे। साथोसाथ जेटला भी आयोजकों साथे भी गई काले मीटिंग थई हती, आयोजकों ने भी घणा बधा समझ करवामां आवी छे, जेमां खास करीने राजकोट में टीआरपी जोन में जे रीते दुखद बनाव बना तो एना ज ध्यान में राखी अने गवर्नमेंटना सूचना अने नामदार कोडना सूचना अत्रे तो बधा सूचनाओं पालन करवा माटे जेमां खास करीने फायर प्रूफ तमाम मटीरियल यूज करवामां आवे अने फायर एक्जिट्सना अलग अलग जो एक्जिट पॉइंट होय छे एकदम एना क्लियर आमा जोई शकाय आ प्रकार जो रेडियमना लाइट वाला जो एक्जिटना जो बोर्ड लगावीने एक्जिट रूटना जो दर्शाववामां आवे अने जेटला भी एक्जिट रूट्स छे आ रूट पर कोई पण प्रकारना वस्तुओं या कोई पार्किंग नहीं रहे जेथी इजीली लोग निकली सके आ प्रकारने भी त्यां सुविधा करवामां आवी छे। साथोसाथ जेटला जनरेटर्स होय छे आ जनरेटर अपना डोम या मंडप या जो स्थल से एनाथी दूर जाए जो है आ व्यवस्था करवामां आवी छे एना दूर राखे, एना सटाई नहीं राखे जेथी कोई पण बनाव बने तो एमां तकलीफ नहीं पड़े। पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी यूज करवामां आवे छे जनरेटर माटे आ त्यां स्टोर नहीं करे, सीसीटीवी कैमराओथी सजज रहे अने अवारनवार जो वच्चे गरबाना वच्चे ज्यारे ब्रेक पड़े छे त्यारे लोकोने समज पण पाडवामां आवती रहे कि इन केस ऑफ एनी एमरजन्सी तमारा आ प्रकारना आ जग्याओथी एक्जिट लेवाना रहेशे, क्यां जवाना रहेशे
આ પ્રકારના તમામ સમજ આયોજકોને કરવામાં આવે છે. સાથોસાથ આયોજકોના જો ફ્રિસ્કિંગ જો અંદર ખેલૈયાઓ આવે છે એના ફ્રિસ્કિંગ કરવા માટે જો ડોર ફ્રેમ મેટલ ડિટેક્ટર યા હેન્ડ હેલ્ડ મેટલ ડિટેક્ટરનો ઉપયોગ કરવા માટે જણાવવામાં આવેલા છે. અને સાથોસાથ મહિલાઓ માટે બહેનો માટે અલગથી ઇન્ક્લોઝર બનાવીને ત્યાં એના ચેકિંગ માટે રાખવામાં આવે અને પુરુષો માટે અલગ. અને કોઈ પણ સંજોગોમાં એવા કોઈ વ્યક્તિઓના એના વોલેન્ટિયર તરીકે અથવા જો પ્રાઇવેટ સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકે નહીં રાખવામાં આવે જેના ઉપર ગુનાહિત કોઈ પ્રવૃત્તિમાં પહેલે પકડાયેલા હોય યા એના એન્ટિસિડન્ટ વગેરે એટલા ખરાબ હોય એના માટે જો અમે લોકો સૂચના આપી છે જેટલા આ લોકો રાખે છે સિક્યુરિટીના માણસો વોલેન્ટિયર રાખે છે એના નામ આપણે પોલીસને આપે અમે લોકો અમારા ગુજકાઓમાંથી વેરીફાઈ કરીશ કે એના ઉપર કોઈ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ તો નથી. સાથોસાથ એવા પણ કોઈ વ્યક્તિ તો નથી જો ત્યાંના માહોલ ખરાબ કરે. આ પ્રકારની સૂચના આપવામાં આવી છે. સાથોસાથ જેટલા બી નિયમો કાનૂનના પાલન સરકારશ્રીના અને નામદાર કોડના એના સમજ પાડવામાં આવી છે. અને અમે બધા આપના થ્રુ અપીલ પણ કરીએ છીએ કોઈ આપણા 100 નંબર ઉપર કોલ કરશે યા પોલીસ કંટ્રોલ ઉપર કોઈ બહેનો કોલ કરશે તો અમે લોકો એના જો અગર કોઈ રહેશે કે એના ઘર જવાના રહેશે તો અમારી તમામ થાણાઓને અમે થાણા અમલદારોને બી સૂચના આપી છે કે આ બહેનો સહી સલામત ઘર પહોંચે એની બી તમામ તકેદારી રાખે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચ એસઓજીની ટીમો તમામ એવા વોચ રાખશે જેથી જો બહેનોના વિરુદ્ધમાં કોઈ ગુના નહીં બને જોઈએ એની તકેદારી રાખવા માટે જો ક્રાઇમ બ્રાન્ચ એસઓજીની ટીમો રહેશે. અને સાથોસાથ જેટલા અવારું જગ્યાઓ છે જ્યાં અંધારા રહે છે જો અમારા ડાર્ક સ્પોટ્સ રહે છે ત્યાં આગળ કોઈ વીનો જ્યાં અમારા ગરબાનો પ્રોગ્રામ છે એના આજુબાજુ હોય તો એના આયોજકો એના લાઇટિંગ કરાવે. નહીં તમે એસએમસીના સાથે સંકલનમાં રહીને એવા જગ્યાઓ પર લાઇટ ગોઠવી જેથી કોઈ પણ પ્રકારના ત્યાં અઘટિત બનાવ નહીં બને. તો સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. અને